Hello guys, welcome back to the live stream. Welcome back Fight Zone. How are you after a long time, bro? I hope everyone is doing good. Let's make big money today. We have news coming in just 30 minutes. Our current trade is running in good profits. This trade is running in good profits right now. We are up almost 80 pips in this trade. Hello, love, how are you? Hello, Noor, bro. Welcome back. Make sure to like the stream, everyone, guys. As soon as we get the breakout of this area, we will have the MSS. Once we have the breakout of this level, then we can expect a sharp move to the upside. And in just 30 minutes, we are going to get the core PC price index and GDP data. Go for the best. I think let's get some people on the live stream, then I will do share my plan about the news here. Make sure to like the stream, everyone. Do it fast. Brother North Kyle, this signal was shared in the VIP group, and today I started my day a bit late. This is my first trade of the day. I shared the first trade in the VIP group. Now the second trade, I will share that in the public chat. By the way, VIP is free. You can join it at any time. Welcome back, Shazina Muid. Guys, दबा के लाइक करो यार फटाफट. कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं फिर मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ. Once we have some people live, then I will share my analysis for the news. Let's see. Okay, are you guys ready for the analysis of the news? Let me know. We have 30 minutes. Tom Ultra Furkan Bhai in just 30 minutes. Perfect. Everyone is ready. Let me show you a bigger picture first. We have there is the POI. Okay, so I am starting. Let me show you the bigger picture first, starting from the 1 hour time frame. On the 1 hour time frame, if you see this move, this one, you can see price is just ranging within this almost 900 pips of area. Every time price came back to 4602 level, it rejected significantly, and every time price reaches the high, which is 4690 or 4680, price rejected significantly. That means from the past 2 days, price was waiting for an important event, which is now we are going to face in just few minutes, the GDP data and the core PCE price index. Price was only waiting for these two events so that price can identify the final move for the rest of the week. If we see, this is the trend line, and right now we are witnessing the breakout of this trend line at the moment.
This is the trend line, and right now price is doing a breakout of this trend line, which is a bullish sign. Now coming back to the news, we have core PCE price index and GDP data, quarterly GDP data. Core PCE price index, if the forecast for the core PCE price index is 0.2%, the forecast for the GDP is 1.5%. If the actual data of core PC price index and GDP is higher than the forecast, like if the data released is 0.3% and 1.7% respectively, then it is bearish for gold because it is good for currency. If both of these data are positive or are higher than the forecast, then it is bullish for US dollar and negative for gold. And similar is the case if we see the opposite direction. Okay, right now let me give the update in the community. We are hitting almost 150 pips of profits. Here is TP3 4626. Okay, coming back to the main point, the core PCE price index and the GDP data is directly related to NFP, is also directly related to CPI and PPI. So this data, core PCE price index and GDP, ये डायरेक्टली लिंक है हमारे पास NFP, CPI और PPI के साथ। और आप लोगों को पता है PPI, CPI, NFP ये तीनों जो डाटाज हमारे पास आए थे लास्ट वीक और एक वीक उससे हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले, ये सारे बुलिश थे। उस इन सब डाटाज के अंदर जो हमें चीज़ कॉमन नज़र आ रही थी वो ये थी कि प्राइस जो US डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है क्योंकि जॉब्स कम हो गई हैं। NFP ने हमें शो कराया कि जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। CPI ने हमें शो कराया कि इन्फ्लेशन स्मूथ हो गई है। ठीक है, अब ये सारे डाटा जो थे ये पॉजिटिव थे गोल्ड के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम शो कराया था। अब अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें, जो CPI, FOMC मीटिंग मिनट्स और PPI का डाटा था, ये डायरेक्टली लिंक है हमारे पास आज की दो न्यूज़ के साथ, कोर PC प्राइस इंडेक्स और GDP के साथ। मोस्टली जो चांसेस इस टाइम पे हैं वो ये हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो नेगेटिव आएगा। पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा जो एक्सपेक्टेशन, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 0.1% तक आएगा, जो कि बुलिश साइन है गोल्ड के लिए। लेकिन जीडीपी को अगर हम देखें तो ये पूरे 4 महीने का डाटा होता है, ये 1 महीने का डाटा नहीं है। ठीक है, और 4 महीने के अंदर 4 डिफरेंट सीपीआईज आती हैं, 4 डिफरेंट पीपीआईज आती हैं, 4 डिफरेंट एनएफपी आती हैं। तो ये जो जीडीपी का डाटा है ना, ये वाला, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर तो ये न्यूट्रल रहा, क्योंकि पिछला भी ये न्यूट्रल ही था, अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री देखें तो मई के अंदर जब ये आया था तो इसकी जो फोरकास्ट की जा रही थी वो 2% की जा रही थी, लेकिन एक्चुअल डाटा आया था 1.6%। ठीक है, उससे पहले मार्च के अंदर आया था ये वाला डाटा 0.7% इसका एक्चुअल डाटा आया था। ये वाला जो डाटा है अगर तो आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा गोल्ड के ऊपर। पहले मैं आप लोगों को 3 सिनेरियो समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से 3 सिनेरियो समझा देता हूँ। बाद में मैं इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट एवरीथिंग इन इंग्लिश लेटर ऑन, डोंट वरी गाइस। पहले मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इजीएस्ट वर्डिंग के अंदर जो है मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। अब पीसी प्राइस इंडेक्स क्या करेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन है 0.1%। ऑलराइट, पीसीई प्राइस इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो है 0.1%। ये बुलिश आ सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक हमारे पास कर रहा है पीपीआई, सीपीआई और एनएफपी के साथ, जो हमारे पास अभी 1-2 हफ्ते पहले आया था। ठीक है, ये जो जीडीपी का डाटा है ये न्यूट्रल आने के चांस हैं।
या हो सकता है ये मैनिपुलेट कर जाए, ये हो सकता है ज़्यादा आ जाए। अगर तो जीडीपी का डाटा जो है ये 1.5% से ज़्यादा आ गया तो ये बेरिश हो जाएगा गोल्ड के लिए, ठीक है। अब जीडीपी का डाटा जो है ये पिछले 3 से 4 महीनों की सीपीआई और पीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग जो प्रिडिक्शन इस टाइम पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर अगर हम लोग एनालिसिस निकालें तो हो सकता है गोल्ड बुलिश चला जाए और 4700 के टारगेट को ईजिली हिट कर दे। अगर मैं आप लोगों को अभी वाला सिग्नल दिखाऊं जो मैंने अभी ट्रेड दिया हुआ है अपनी कम्युनिटी के अंदर, वीआईपी कम्युनिटी के अंदर, तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो उस वीआईपी कम्युनिटी को फॉर फ्री, ठीक है। इस टाइम पे जो मैंने सिग्नल दिया हुआ है उसके अंदर मैंने फाइनल टीपी जो है वो ओपन रखा हुआ है और वो 4700 के आसपास का मैंने रखा है कि 4700 तक अगर तो हमारा डाटा पॉजिटिव आया था तो मैं इसको चलाऊंगा। ये मैं शेयर कर देता हूँ, ये देखो। अगर डाटा मेरे पास पॉजिटिव आता है तो ये ट्रेड बहुत इजीली जो है 4700 को टच कर सकती है, ठीक है। 1000 पिप का ट्रेड बनेगा बहुत इजीली अगर डाटा हमारे पास पॉजिटिव आता है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बुलिश आ सकता है। बट हमारे पास ये जीडीपी का जो डाटा है ये काम खराब करेगा, ये मैनिपुलेशन करेगा। इसने विक्स रिलीज करनी है, प्राइस जो है वो दोनों साइड के ऊपर जो है वो विक क्रिएट करेगी, बुलिश साइड के ऊपर भी और नेगेटिव साइड के ऊपर भी, जो बेरिश साइड बनती है उसके ऊपर भी करेगी, ठीक है। इसका प्लान क्या बनता है, ट्रेडिंग प्लान हमारे पास अब क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारे पास ब्रेक इवन के ऊपर है ऑलरेडी और एक एंट्री है हमारे पास 4610 के लेवल के ऊपर। एट दिस लेवल 4610 देयर इज पेंडिंग एंट्री, वी विल डू इट लेटर ऑन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। हियर इज 4610। ओके सो इफ इन केस प्राइस बुलिश आ जाती है, डायरेक्टली बुलिश होती है, तो हमारे पास ये वाला ट्रेड इजीली 4700 को हिट कर देगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है 4670 4657 इन लेवल्स तक ये बहुत इजीली जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डाटा हमारे पास नेगेटिव आता है इस सेंस के अंदर कि कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है ये हमारे पास बुलिश आए, 0.1% आए या 0.2% से नीचे आए, और जो जीडीपी का डाटा है अगर ये हमारे पास नेगेटिव आया था गोल्ड के लिए, अगर ये ज़्यादा आ जाता है 1.5% से, तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो एक हमारे पास बेरिश कैंडल जो है वो रिलीज करेगा नीचे की तरफ। उस केस के अंदर हमारी ये 4610 वाली एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 पिप्स के स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करें और ये हमें ऑलमोस्ट 500 पिप्स या 700 पिप्स का मूव दे दे, या हो सकता है 300 पिप्स का ही मूव दे दे। तो जितना भी आए वो ये वाला सिनेरियो बनता है सिनेरियो नंबर 2, जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर जीडीपी का डाटा पॉजिटिव आ जाए और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो ये वाला सिनेरियो हम लोग फॉलो करेंगे। अगर तो दोनों ही डाटा पॉजिटिव आ जाते हैं, अगर तो दोनों ही डाटा 0.2% और 1.5% से ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल 0.3% और 1.6% आता है, तो फिर गोल्ड बेरिश हो जाएगा। फिर हम लोग सेलिंग देखेंगे और सेलिंग जो है वो हम लोग एक अच्छी तगड़ी किस्म की सेलिंग पकड़ सकते हैं, जो हमें 500-600 पे वहाँ से भी हमें मिल सकती है इजीली, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है ये पॉजिटिव आ जाए, सॉरी नेगेटिव आ जाए, 0.1% आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है, जो कि बुलिश है गोल्ड के लिए, और हमारे पास जीडीपी जो है ये न्यूट्रल रहे, तो उस केस के अंदर जो है गोल्ड विक्स क्रिएट करेगा दोनों साइड के ऊपर और स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। इसलिए अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा लो। ये वाली एंट्री हमने उठाई हुई है 4615 से, अपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लगा लो। नाउ एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग इन इंग्लिश। Okay, so I am saying that I have 3 plans right now for the news. We still have 20 minutes. It's a lot of time, so I can explain everything very easily. I have 3 plans depending on different situations for trading on the news time. The first plan is
First of all, my expectation is not prediction. It is my expectation that the actual data for the core PCE price index will be less than the forecast, which is positive for gold. It is my expectation because NFP, PPI, and CPI data all are directly linked to this PCE price index news. Whereas on the other hand, the GDP data is the combination of the CPI and PPI data which were released in the past 4 months. It is the combination of those data. So it can be very manipulative. The GDP data will be very manipulative. We can't predict the GDP data. We can predict the PCE price index, but we can't predict the GDP data. But mostly the chances are it will be neutral. It will be like 1.5%, not more than that or not less than that, which is my expectation again. So coming back to the point which I was saying, I have three plans. The first plan is, if the actual data for the core PC price index is 0.1% or overall less than 0.2%, which is positive for gold, and the actual data for the GDP is positive, like higher than the forecast, like 1.6% or 1.7%. In that scenario, we have one data in favor of gold and one data against gold. In that scenario, price can go back, hitting our stop loss at break even for the 4615 entry, and then it can execute our entry point at 4610. At 4610, we have pending order. We can take a buy trade at 4610 with a stop loss of just 60 pips, and we can target 4650, 4640. These are the levels which we can target. So it can give us 400 or 500 pips of move. So this is the scenario number one. If the Now coming to the scenario number two, if the actual data of the core PC price index is less than the forecast, and the actual data for the GDP is also less than the forecast, which means both of the datas are strongly in favor of gold. That means price can explode from here and it can hit $4,700 level very easily. It can hit these levels very easily then in that scenario. So the VIP traders who are already in this trade, they don't need to worry about anything. But for those members who are new here and from the free community, they can take the trade after the breakout of this level, this area 4634. Okay, this is the scenario number two. Coming back to our third scenario, which is, if the core PCE price index comes neutral or higher than the forecast, like 0.3%, and the GDP data is neutral or higher than the forecast. In that scenario, I will prefer doing a sell trade on the breakout of this level, this yellow line. On the breakout of this yellow line, I will prefer doing a sell here. If the actual data is neutral or higher than the forecast for both of these news at the same time. So in that scenario, I will prefer doing a sell trade, and we can expect a sell from 4600 level to 4550. So this can be a 500 pips of move again. So these three are the scenarios which I have explained. If you have any questions, you can ask. अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ. तीनों सिनेरियोस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास दो डाटाज इकट्ठे एक टाइम पे आ रहे हैं. सबसे जो मसले वाली बात जो क्रिएट कर सकती है वो है जीडीपी का डाटा. जीडीपी के डाटा को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. कोर पीसी प्राइस इंडेक्स को फिर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जीडीपी के डाटा को करना मुश्किल है. ये दो न्यूज़ इकट्ठे एक टाइम पे आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें मसला आ सकता है अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों डाटास के अंदर. अगर दोनों डाटास में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो प्राइस जो है वो मैनिपुलेशन करेगी और स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी. एचएम गेमर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सारा एक्सप्लेन किया है.
स्ट्रीम को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, यही कोई 5-6 मिनट पीछे करके देख लो, सारी समझ आ जाएगी। मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया। किंग डेविड, हेलो ब्रो, वेलकम बैक। इज द एंट्री वैलिड नाउ और वी होल्ड? ब्रदर, which entry you are asking about? I am in 4615. I am in buy from 4615. If you are with me in this trade, then you can hold this trade, bro. Indian government. All right, Sunny bhai, I will explain when to do the entry. Guys, make sure to like the stream, everyone. Make sure to do it instantly. Hello, Harsh. Harsh, bro, how are you? Is that you trade? 4609 से एंट्री कर सकते हैं ऋषि। हाँ भाई, 4609 से भी एंट्री बनती है। 4610 और 4609 ये मेरे भी लेवल्स हैं, 4609 और 4610। हर्ष भैया कैसे हो, ठीक हो? Okay, I think the price is going to hit my TP5, which is 4632. We still have 10 minutes left in the data. If the price goes back to 4610, we can expect doing a buy entry depending on the selling momentum. If the price breaks this yellow area, this one, then we can expect doing a sell entry on the breakout of this area. Then we can target 4540 or 4560 levels. But if the price breaks on the news time, if the price breaks this area, then we can expect a buy trade hitting the 4700 target. This is only for those people who are just joining right now. So, are you guys ready for the news? We only have 9 minutes left. Make sure to like the stream, everyone, guys. Do it now so we can do a very good trade during the news time. Do the like right now.
If you have any questions regarding the news trade, let me know. I can clear your questions. HM गेमर, हाँ भाई, मैं अभी बाय के अंदर बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी। मैं बैठा हुआ हूँ 4615 से बैठा हुआ हूँ बाय के अंदर। हाँ, न्यूज़ आने लगी है। 5-6 मिनट रह गए बस। न्यूज़ मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है कि हमारा प्लान क्या होगा। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, वहीं पे हम लोगों ने एनालाइज करना है। ठीक है। ब्रो, लाइव पर भी एंट्री देता हूँ। कल आपके सामने लाइव पे दी थी एंट्री, जिसने कल अच्छे खासे टेक प्रॉफिट बनाए थे। लाइव पे दी थी एंट्री। यार, ये वाली जो एंट्री है ना, ये मैंने वीआईपी ग्रुप के अंदर दी हुई थी। ये मैंने काफ़ी देर की दी हुई है। ये मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले की दी हुई है, ये वाली एंट्री जो अभी चल रही है। ठीक है। किंग ब्रो, writing the signal manually in the group will be very difficult for me during the news time, because price move very fast during news time. So writing the signal manually in the group will be very difficult for me.
Okay, guys, we just have 2 minutes left for the news. Get ready. News is just coming in 2 minutes, guys. 1 minute and 40 seconds. Make sure to like the stream. See the news, bro. Yes, bro. I am on Forex Factory here. Just have 1 minute left. Every level is explained. Let's go, guys. तैयारी पकड़ लो. छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अब हम लोग. ठीक है. ये MSS तो हमारे पास काफ़ी देर का हो चुका है. 15 मिनट टाइम फ्रेम ठीक है. यहाँ पे adjust करते हैं. Go for the best. Okay, 20 seconds left, guys. 20 seconds left. 4630. 10 seconds left. 5 seconds only. Plan is ready. Let's go. News is released. On Forex Factory, the data is pending. The news seems to be bearish. Or probably 4-6. Okay, the core PCE price index is neutral. It is 0.2%. GDP data is still loading. PCE price index is still is 0.12%. Okay, both of the datas are neutral. Both of the datas are neutral. We can expect some volatility on both sides. Price can take stop losses on both sides. We have a stop loss at break even and our trade is still running. Let's see if the price kicks us out from this buy trade. Both of the datas are neutral. As you can see, 0.2% on PC price index and 1.5% on GDP data. So both of these datas are neutral. So when the data is neutral, we can expect price taking the liquidity on both sides. Okay, I am out at break even. We can expect doing a buy trade at 4610 now. Let's see. Krishna bro, it is not positive for gold when both of the high impact datas are neutral. In such situations, price can take stop losses on both sides. Luckily, we have stop loss on break even. Uh, so yeah, we are safe. We have nothing to lose, even though we have booked some profits at the top. The price kicks me out at break even, and I'm expecting to do a buy trade now at 4610 level. Here is my buy trade, sir. 46.
Guys, make sure to like the stream, everyone. We have the order loading. Let's see. This candle is taking liquidity. It has taken liquidity on the upside first and then taking the liquidity from the downside. Let's see if it can take our order. Everyone tap the like button, bro. If you like the stream, we can get a good signal, good entry point. Five times. Nice, Furkan bhai. क्या बात है. फोर सिक्स वन जीरो पे आ जाए, हम एंट्री लेंगे अपनी. 4610, bro. 4610 is the new entry point. We will do a very tight stop loss trade, like only 60 pips. Stop loss 60 pips का होगा सिर्फ. 4604 सॉरी 4603 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और 4610 पे एंट्री होगी, सिंगल एंट्री. Narinder Kaur asked me about the capital. Brother, see my video which I have shared on Instagram. You can see that here. Gordon, yes, you can put the buy limit at 4610. Make sure to put the stop loss at 4603. But only do the entry on my confirm call. When the price reach 4610, when I give the confirm call, do the entry only at that time. Yes, Indian government 4610 0.02 lot size only one entry. कैंडल ने धोखा दिया. ऐसा ही है. एचएम गेमर कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है. Candle has just taken the liquidity, so we are just waiting for the entry point at 4610. Hope for the best. हाँ एचएम गेमर, कोशिश है कि एक एंट्री तो बने लाइव पे. नहीं तो ग्रुप के अंदर तो लाजमी दूंगा. लाइव के ऊपर वैसे मैं डेली देता हूँ. एक से दो एंट्रीज में डेली देता हूँ लाइव के ऊपर.
Go down, bro. Personally, I do not prefer doing buy limits and then go away. I always prefer manual entries. So that is the thing. HM गेमर कल लाइव के ऊपर जो मैंने ट्रेड दी थी उसने 500 पिप्स का प्रॉफिट दिया है ब्रो। आप कौन सी वाली ट्रेड की बात कर रहे हो? कल वाली ट्रेड देखो, 500 पिप्स का उसने प्रॉफिट दिया था। अ, मैं दिखाता हूँ ग्रुप के अंदर, यहाँ पे ला कर दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ वही, 500 पिप्स का उसने दिया था प्रॉफिट। स्नाइपर एंट्री थी यार। ये आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे, लेकर आओ। Perfect, Gordon. If that's the case, then you can put only 0.01 limit order at 4610, and yeah, just make sure to come back after few time to just get the update which I will share in the group. I will also share this signal in the group now because the news time is over, so we have enough time to write the signal in the group. Okay, price is heading toward our entry point. Let's see. 4614 has been hit.
अरे यार प्राइस आ ही नहीं रही 4610 पे, इतना टाइम। ये लग रहा है प्राइस ने 4646 के ऊपर ना हमारी एंट्री के बगैर चले जाए, फील आ रही है। कोई नहीं, हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे। वी विल फॉलो आवर रूल्स। अच्छा, मैं अब तुम लोगों को यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। तकरीबन ये तीसरी कैंडल है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जिसने लिक्विडिटी वाली जो है ना विक छोड़ी है। एक चांस है कि हमारी एंट्री लग सकती है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है ये लग रहा है कि एंट्री लिए बगैर जाएगा ऊपर। डेविड ब्रो, yes, the chart is on 15 minute time frame and 5 minute time frame. I am saying that the previous three candles on 5 minute time frame has just released a big wick or to the downside, you can see here, which is a good sign that the price can take our entry. But on the 15 minute time frame, it's very difficult that price is going to take our entry on 15 minute time frame. It seems like price will go away without taking our entry. So it's a tug of war between 5 minute and 15 minute time frame. Let's see who will win. We don't only want the entry, we also want the take profits. We don't want the stop loss after the entry. This is also a key point. If the buy entry at 4610 hit, our take profit level can be 4615. Sorry, 14 was a key level. These will be the take profit levels if we get the entry at 4610. Yes, you can do that in environment, two entries with 0.01.
That's a good idea. Okay, okay. Two entries with 0.01. Yeah, it is good. Don't do four entries. Only two entries with 0.01. Harsh bro, what is that 4640? A cell? Okay guys, if the price reach 4635, or let's say if it reach 4636, we can do a sell. This is another trade, another plan. But there will be a problem with this sell because we don't have any fair value gap or order block within this range. That's the problem. Yeah, 4640 is a strong level for selling, bro. But the problem is need to find out trade PUI level first. This area is a selling area. We can expect some sell here. Harsh bro, yes, I'm still waiting for the buy entry. Let's see. I hope it will hit our entry point. I really want it to hit our entry point, bro, because our risk is very minimum and the take profit is huge. It is 1 to 5 risk to reward trade, bro. Yeah, 1 to 4.5. 1 ratio 4.5.
Ecoverse, not Pro. We are not holding our buy position. Previously, we booked our profits at 4630. We are just waiting for the price to hit our entry point at 4610. It is a buy limit order. If you are holding the entry from 4615, then you can. Okay, seems like a big drop. Guys, what is this behavior? Price hit 4611 and our entry is at 4610. It seems like the buy is invalid. Seems like buy is valid. Let me make sure first. I'm finding the reason, uh, or is it is just an illusion to me. Price just hit 4611, then going away. Whereas our entry was at 4610. Not a good sign. Because if this time price come back to 4610, it will not stay at this level. It will go even more down. अगर प्राइस दोबारा 4610 पे आती है, क्योंकि पिछली दफ़ा प्राइस 4611 से रिजेक्ट हुई है अभी, तो सिर्फ 10 पिप्स के डिफरेंस से अगर प्राइस दोबारा आती है हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस ले सकती है. If the price comes back to our entry point, which is at 4610, it will be very risky to enter at 4610 this time because price tapped 4611 and goes away, which is only 10 pips away from our entry point. So this is ridiculous. And now the price is going high, running almost 80 pips in profit without us. Not a good sign. Guys, do not take buy entry at 4610. Do not take buy entry at 461. It is invalid. Yes, 4605 and 04 are strong levels now.
Do not take 4610 entry. The entry should be at 4604. Reason for the buy being invalid now at 4610 is the price rejected from 4611 significantly without taking our order. So that's the problem. We will prefer doing a buy at 46. Yeah, 4605 with a very tight stop loss of 50 pips or 60. 4599 will be our stop loss. Whereas the take profit levels, I will write them again. This trend line is now acting as a resistance area, guys. You can see price is rejecting from this trend line every time. I think we missed the entry.
Yes, bro, 4605 is valid.
No, bro, fight zone. Don't use big lots. Harsh, bro. Yes, 4605 is still valid, bro. We can take the buy trade at 4, but don't go big lots, guys. This should be a risky trade. We will use lots, and we are just risking 60 pips. Our risk is stop loss is 4599. The stop loss will be 4599. Take profit level. I will uh 46 4608 is a you guys. Let me drop the signal, the risky trade. So HM गेमर नो ब्रो, अभी भी हमारा एंट्री जो है वैलिड है, नीचे पड़ा 4605 पे। 1 minute।
Every time frame is bearish right now at the moment, like 1 minute, 3 minute, 5 minute, and 15 minute as well. So taking a buy trade feeling like a risk, but yeah, we are looking for a potential reversal point. So it is worth of risking, guys, because we have 1:5 ratio a reward trade. This is 1:5 trade. So it is worth it. If we lose $60, for example, we will make $300. So it is worth it. Oh, what is this behavior, nigga? All in just a single candle hit the stop loss. Liquidity sweep on us. Price is going back. Yes, bro. Wait for the new setup, guys. Don't worry. It was a small loss. Now that we have broken this level, that means we can now try to find out sell signal, sell entry point. White zone, same here, bro. I always prefer manual entries. That's why. 60 to 605 strong sell. No, bro. I'm now looking for sell entries right now. Buy is invalid. What a big liquidity sweep. Us. That's why, guys, I always prefer doing manual entries. Now you have a reason. HM Gamer, no problem, bro. It was only 60 pips. No problem.
HM Gamer, it will be, let me check. Uh, 4619 and 4625. Okay, remember guys, we have a buy limit order at 4590 as well. I gave that order yesterday. 4590 is a buy limit order. HM Gamer, on smaller time frames, the trend is changing. छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया. Noor bro, almost this will happen to everyone because it was a nice uh, selling at that moment. The liquidity was very fast at that moment, so the slippage may have prevented everyone. That's why it was a very small loss, by the way. The SL and TP for the 4590. Bro, I think I have shared the signal in the group yesterday. I think I have shared that signal in the group. Sunny bhai, how much is your loss, bro? This buy trade? 4590, 4564. Okay, here is the signal. Oh, zero loss. Perfect, bro. SL hit, Tom Ultra. How much is the loss, bro? स्लिपेज काफी ज्यादा थी, इस वजह से मेरा ख्याल है सब लोगों का कम ही लॉस हुआ है जिन्होंने लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे. Yes, Tom Ultra. That's why I always prefer manual entries too. लिमिट ऑर्डर्स इसी वजह से तो मैं लगाने नहीं देता लोगों को. हर ट्रेड के अंदर मैं यही बोलता हूँ कि लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना. जो पुराने लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है इस चीज़ का कि लिमिट ऑर्डर से मैं भागता हूँ. ओके, $50 इज नथिंग ब्रो. And we have this buy from 4590 also available right now. Is valid. Stop loss is 4573. Whereas take profit is 4645. Is huge. It is 1:3.
trade. ओके गाइस, ये दो ट्रेड्स हैं अब हमारे पास 4590 4573 हमारा स्टॉप लॉस है. The stop loss is 4573, entry is 4590, take profit is 4545. Now everything is good. Mr. Release says limit orders are bullshit. So true, bro. Say the same limit orders in gold because gold is unpredictable. Exactly, brother. Gold is unpredictable, that's why manual entries are always preferable. New entry is at 4590, bro. 4590. And the second one is a sell trade. Is at 4519. Sorry, 4619. 19.7. Actually. Let's see the sell
at 4619. I hope this will work. Price is very near to 4619 level. यस इंडियन गवर्नमेंट प्राइस अगर 4619 पे पहुंचे हम सेल करेंगे। सिग्नल मैं ग्रुप के अंदर दे रहा हूँ। बुलिश कैंडल प्राइस ने 19 को टच तो नहीं किया,
करीब है, देखते हैं अभी। टच किए 18.9 को। गाइस मैं ना अभी ये चीज़ सोच रहा था कि हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ना थोड़ा गलत जगह पे रखा था। तो तुम लोग अगर देखो ना, कितनी अच्छी उसने दी है एंट्री पॉइंट से 4605 वाले से। स्टॉप लॉस हमारा गलत जगह पे था। थोड़ा सा अच्छी जगह पे रखते गैप के साथ, 100 पिप्स के साथ, तो फिर ठीक था इतना। लेकिन कोई नहीं, खैर है।
राइट एसएल जो है वो कभी कभी ऐसे ही बनवा देता है। बाकी यार ये मेरी जो ट्रेड है, 19 हिट तो नहीं किया, 18.99 को हिट किया इसने, वहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो 0.02 पिप्स का भी डिफरेंस है। ये चीज़ ना ख़राब है, अगर लगी होती एंट्री मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करके टेंशन फ्री हो जाना था। एनीवेज, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द लाइव स्ट्रीम गाइस, वाज अ नाइस सेशन ओवरऑल। अभी के लिए जो है वो मैं लाइव सेशन जो है फिर खत्म कर रहा हूँ। एवरीवन टेक केयर ब्रो, see you guys tomorrow in the next live session. Bye bye for today, कल मिलते हैं भाई लोग। यस सेल ब्रो वैलिड है, सेल इज वैलिड। I will share the group signal in the group bro, so you can take the entry after my confirmation. I will share the signal in both groups, don't worry. Bye bye guys, take care everyone, see you tomorrow, the next live session.